Hello, my dear viewers. Today I am going to share how you are going to prepare for economics as an optional subject in CSE. That how you will prepare for economics subject, especially because as you know, in GS also a lot of questions come from economics phase. So how you are going to prepare for optional subject economics in your for especially for civil service examination. So to prepare for the economics optional for the civil services exam, start by building a strong foundations with NCERT books, then move to standard test like Misra and Puri and HL Ahuja for core concepts. Consistently integrate current affairs by linking them with the economic survey and budget. Practice writing answers with diagram and graphs and analyze previous year question papers to understand patterns. Right now, build a conceptual foundation. So first, how you are going to go with? First, build a conceptual foundation. How it is? Start with NCERTs. Begin with the class 11th and 12th NCERT books for a strong understanding of microeconomics and macroeconomics. Second point is master standard text. Refer to standard textbooks like those by Misra and Puri and HL Ahuja for conceptual clarity. Right? What you will do in step 2? Stay updated with current events. First, link static and current topics. Economic concepts are often tested through current events. Stay updated with the latest development by following the economic survey and the union budget. Next is connect to real world examples. Use the theories and models from paper 1 to explain real life economic scenarios and current events in your answers. Now step 3, practice and application. Focus on diagrams and graphs. Graphs are crucial for scoring. Practice drawing and using them effectively to explain concepts wherever applicable in your answers. The second point that you have to put more and more focus on it, practice answers writing. Regularly write answers to previous year questions. This helps you structure your answers logically and improve coherence. Next one is make notes. Create concise notes for each topic, including definitions, examples, relevant government schemes, and recent developments to aid in revision. Right? Step 4. Refine your strategy. Analyze previous year's papers. Study previous year question papers to understand the exam pattern and the weightage of different topics. Next, take a test series, which is taking a test series also one of the part, the very important part, as you know. So how you are going to take a test series? Join a test series for regular assessment and feedback from mentors. Your mentors, the mentors you all have, so you have to get the feedback from them out. And in this way, you can have your regular assessment. Balance the syllabus. So divide the vast syllabus into sections and create a study plan. Make sure to cover the topics mentioned in the syllabus thoroughly. Right? So that means it's a very good subject. Of course, economics is a very good subject because it's a very interesting subject as well. Because as you know all that economics, whether it is going to for the macro and microeconomics, when you go through the, as you know, when you go through the Adam Smith definition, Marshall definition, Robinson, Samuelson definitions, and when you go with the law of demand, elasticity of demand, when you go with the perfect equilibrium, marginal utility, diminishing marginal utility, increasing marginal utility, diminishing marginal return, increasing marginal return, regarding theory of rent, modern theory of rent. So these all are the part of very interesting, of course, in economics phase. While I'm only the one part I'm talking about, as you know, and there are a lot of things are to be researched, very nicely researched. So when you go with the exception of the law of demand, like given paradox is the highly priced commodity is there, that's a very, very important. For example, just I am going to give you one example of the economics, how the economics is going to be. It's a very interesting subject when you will go in depth of economics, because economics tell you the study of the market and we are studying the consumer taste and all. Before establishing any business, you have to understand the market first, then only you will be able to catch the market, right? So economics plays a pivotal and crucial role in this.
especially not only for the students, for the businessmen who all are having very good business. So they have to understand the economic subject very nicely. Like if they are going to establish their business, and if they want to grow their business and expand their business. So एक highly priced commodity, that means I'm telling you one thing. What is a highly priced commodity? Of course, because the thing is that why do you purchase gold? Because gold is a very rare material, right? Metal. So that means very scarce. It is very scarce. So that way it is valuable, right? And so it is. We don't purchase सोना. हम सोना इसलिए नहीं खरीदते कि वो चमकता है. ध्यान दीजिएगा. हम सोना इसलिए पहनते हैं so that we are going to have very impression when we go to the party. The people they think yeah he is having very much gold. He is very rich of course. बड़ा धनी होगा, बहुत ज़्यादा सोना है उसके बाद बहुत ज़्यादा धनी होगा. तो वो इस तरह की एक इम्प्रेशंस को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सच इम्प्रेशंस, नो वी आर द गोल्ड, दैट्स ऑल. एंड इट इज़ वन थिंग वी कैन से इट इज़ ए लिक्विड कैश ऑल्सो. वन टाइम गोल्ड इज अदर फॉर्म ऑफ कैश बिकॉज इट इज़ अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेटल. नाउ अगर सोचिए गोल्ड जितना कीमती है उसके जगह तक कोयला थोड़ा उससे ज़्यादा कीमती हो गया तो क्या सोचते हैं आप? आदमी गोल्ड पहनना शुरू करेगा? नहीं, कोयला पहनने लगेगा. चीज़ को समझिएगा, क्योंकि कोयला फिर कोयला को कोयले के रूप से नहीं देखा जाएगा. कोयले इतना ज़्यादा कीमती हो जाएगा तो कोयला को कोयला नहीं देखेगा आदमी. फिर कोयला पहनना आदमी शुरू कर देगा. फिर सोना अगर बाई चांस थोड़ा सस्ता हो गया, गरीब जैसे खरीदने लगा सोना, तो धनी लोग खरीदना बंद कर देंगे, राइट? क्योंकि उनको कहीं भी इक्वल नहीं करना अपने आप को. जहाँ लोगों की मेंटालिटी समझने की कोशिश कीजिएगा, इकोनॉमिक्स वही बताती है हमें. तो अब क्या है, कोयला पहनना शुरू कर देगा आदमी लोग, बाप रे कोयला पहना है, कितना बड़ा आदमी होगा. तो क्या कोयला क्या है? काला है ना, चमकता तो है नहीं, फिर भी आदमी कोयला पहनेगा क्योंकि वो स्कैर्स हो गया. फिर स्कैर्स हो गया, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सोना उसके पीछे, सोना कुछ नहीं लगने लगा, काला सोना हो जाएगा फिर वो. ठीक है, अभी हम पीला सोना पहनते हैं, उस समय हम काला सोना पहनने लगेंगे. काला सोना मतलब कोयला. कोयला अगर स्कैर्स हो जाता है तो वैल्यू उसकी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो लोग कोयला बनना शुरू कर देंगे. तो लोगों की मेंटालिटी ये है कि कोई चीज़ जो स्कैर्स है उसे में खरीदना है, जो कीमती है उसे में खरीदना है, क्योंकि ताकि जितना कीमती हम रखेंगे हमारे स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा. तो हाईली प्राइस कमोडिटी मतलब ये होता है जिसकी प्राइस जितना ज़्यादा होगी वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल मार्केट में होगा. ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को. सो दिस मीन्स इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद आदमी सोचिए, जैसे ये बड़ा बीच में हमने हुआ था ना कि प्याज का दाम बढ़ गया था, तो हमारा बड़ी सारी कमेंट निकलने लगे थे मार्केट में कि दहेज में लोग अभी सोना प्याज मांग रहे हैं सोने की जगह पे, कि मुझे 1 बोरा प्याज चाहिए, 2 बोरा प्याज चाहिए. मतलब क्या है, प्याज का दाम बढ़ गया था तभी तो ये दहेज के रूप में आने लगा. वैसे वो एक चंद जोक था, फन था, पर हम लोगों ने लेना शुरू तो कर दिया था प्याज का नाम भी सोने के जगह पे, क्योंकि उसकी दाम बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका ना, आपका किसका ना, इकोनॉमिक्स का. तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमारी सोच क्या है, कंज्यूमर की सोच क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, ये पूरी चीज़ हमें इकोनॉमिक्स से पता चलती है. तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है. अगर हम इसमें डेप्थ में जाएंगे तो हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें से मिलेगी. ठीक है, तो जब आप किसी भी नियम के साथ जाएंगे, चाहे रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हो, किसी भी चीज़ के आप साथ जाएंगे तो आपको डिफरेंट जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. तो ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सो यू हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ द यूटिलिटी ऑल्सो, राइट? तो वहाँ पर हमें डिमांड में जाना है, यूटिलिटी में जाना है. फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट में जाना है, कि हमारा डिमांड क्या, हमारी नेसेसिटी क्या होती है, हमारा कंफर्ट क्या, हमारी लग्जरी क्या है. ये सभी चीज़ों के बारे में बताई जाती है इसमें डिटेल में. सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो मैंने कुछ राइटरों का नाम लिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू गेट दैट मार्केट फ्रॉम द मार्केट itself. When you will go to the market, you will get all the writers' books. Go through the writers' books and get the actual concept of the economics, right? Whether it is going to be macro or micro Indian economics, you will get a lot of interest in it. When you will get the interest, definitely it is going to be a very scoring subject of yours, right? So this is the very good book. Of course, very good. This is what the video I am making today. It is going to help you a lot. Definitely, it will create interest within you also. And when you will go through the subject, then you will get interest. Of course, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते थे, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आपका होगा तभी आप उसको ऑप्शनल लेंगे, पर उसको डेप्थ में आपको जाना है, एक एक चीज़ को समझना है. अब ये नहीं है कि हमें सब्जेक्ट स्कोरिंग करना है, अब आपको डेप्थ में जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, किस रियलिटी से आ जाएगा वो पता नहीं चलेगा. तो आपको इन द डेप्थ गहराई में जाना होगा. आपका गहराई में जाने के लिए आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए. तो मैं नेक्स्ट कभी कोई डेफिनेटली अभी सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगा, फिर मैं क्लास लेना शुरू करूँगा, मतलब मैं बोर्ड में भी समझाऊँगा एक एक चीज़, आपको बताऊँगा किस तरह से ये कितनी इंटरेस्टिंग है, पूरे ग्राफ में पूरी इकोनॉमिक्स है वो मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टुडे. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल गो विद सम अदर सब्जेक्ट ऑफ अदर ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर CSE. थैंक यू वेरी मच.